फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स का मिशन सफल रहा है। चारों एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS पर पहुंच गए। स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ स्पेस स्टेशन पहुंचने का भारत का सपना पूरा हो चुका है। बता दें कि शुभांशु शुक्ला की अगुवाई में ही भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी प्लान्ड है। स्पेसएक्स के ड्रैगन ग्रेस यान ने धरती की 28 घंटे की कक्षा परिक्रमा के बाद दोपहर 4:01 पर ISS पर सफलतापूर्वक डॉकिंग की। अंतरिक्ष में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की इस टीम का हिस्सा रहे शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए। इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पेगी वेस्टन कर रही हैं, जबकि शुक्ला मिशन पायलट की भूमिका में हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भेजी गई इस टीम में हंगरी के तिबोर कापू और पोलैंड के स्लावोश उजनास्की भी शामिल हैं। नासा ने पुष्टि की कि सॉफ्ट कैप्चर के बाद 12 हुकों की मदद से यान को स्पेस स्टेशन से मजबूती से जोड़ा गया और पावर लिंक और कम्युनिकेशन कनेक्शन स्थापित किए गए। अब कुछ घंटों के भीतर चारों अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में प्रवेश करेंगे और 14 दिन का खास अंतरिक्ष अभियान शुरू करेंगे। जब शुभांशु शुक्ला के यान ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉकिंग की तो ये नजारा उनके माता पिता भी लखनऊ में लाइव देख रहे थे। बेटे की उपलब्धि की खुशी माता पिता के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। बहुत अच्छा बाहर आ गया बेटा, स्पेस में आ गया, बहुत खुशी की बात। आपने देखा उसका लाइव प्रसारण, कैसा लगा आपको देख के? ठीक कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। 40 वर्ष बाद कोई भारतीय जो है अंतरिक्ष में दिखा है, कैसा लगा देख के? अब कुछ नहीं इस समय बता पाऊंगी मैं। आप भावुक हैं लगा देख के, कैसा लगा? मैम आपने लाइव फोटोज देखी, कैसा लगा आप अपने लड़के को देख के? अच्छा लगा, प्राउड मोमेंट हमारे लिए। बता दें कि जब एक्सियोम मिशन 4 ने सफल उड़ान भरी थी तब भी शुभांशु शुक्ला ने देश के नाम एक संदेश दिया था। वो संदेश क्या है हम आपको दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये शब्द थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के, जिन्होंने हर भारतवासी को गर्व से भर दिया है। अब शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। वही अंतरिक्ष पहुंचने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष पहुंचे थे। जाते जाते आपको शुभांशु शुक्ला के यान की सफल डॉकिंग की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down.
We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage preparing 1 for, as well as the first stage's boost back burn. With that, Minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up. Couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T plus 7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch that. Entry burn shutdown. there you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy.
2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance.